have you have like achieved this goal of your life to get admission in IIT Bombay? Can you share your experience? Have you have prepared for GATE and something like that? From when you have started preparing for GATE, and how much like hard work you have done for achieving this goal? Yes, ma'am. I have started for a GATE preparation in my fourth semester, and daily I work on 2 to 3 hours for the GATE. And Okay. for the GATE, continuous preparation, consistency, and dedication is required. And practice makes man perfect. That's why practice is another thing that requires in a GATE. Okay. Anything else, that is which subjects are important for the GATE, and which subjects must be focused thoroughly, and how to work on those subjects? Can you share? Yes, yes, ma'am. Mainly focus on one subject is a data structure and programming. It's include around 15 to 17 marks weightage, Okay. and then focus on theory of computation and compiler designing. It's around Okay. 10 to 12 marks. Means your 25% is a fix if this Okay. 5 subject is clear. Yes, so currently students are in fifth semester. So you are already studied like data structure, DBMS, and currently you are studying algorithm. So this all subjects will be helpful in GATE examination. Fine. And as Kamal shared that weightage of these 5 subjects are really very important for clearing the GATE. Yes, Yes. Anything else that you want to suggest to your juniors, Kamal? and for the GATE, please solve last 30 years previous year papers. Uh, yes, that is also important thing. You can solve last 30 years papers, and it is available, I think, so on GATE Forum website. Year-wise paper and some of the Yes, solutions of previous years also available. and if you found it in a GradeUp website in a better way, it's like a virtual exam form. Okay. One more IITian is currently with us, Satvik. Yes, Hi, ma'am. Satvik. Welcome to the Hello, ma'am. interaction. So, Hello. yes, can you share your experience and journey to achieve this goal to get Uh, admission in IIT Hyderabad? sure, ma'am. I would love to. So, first of all, as Kamal mentioned, how should you, the only term for clearing gate is sheer hard work. But sometimes it happens that the 3 hours are not in your forte. So, actually, I would like to tell my rank was 4,332. Still, I landed in IIT Hyderabad, where the last rank admitted in IIT Hyderabad is rank number 338. So it is not like the BTech BTech admission that you only need to get the rank and you get into the IITs. There is also separate procedure for the gate for admission in IITs, there where you can give the separate test, also an interview. But I would suggest that first go for the gate. If you can do very well in the gate, then that would be easier compared to interview, because in interview there are the many factors which are not in your hand. For example, how you speak, how is your confidence, your for example, in this corona time, internet connectivity can also play an pivotal role for deciding your admission. So my suggestion would be, first of all, go for the gate. If the luck is in your favor, then you can get admission through great gate. And if not, then also there is a chance that you get to pursue your masters from the premier institutes like IITs. Okay, so anything else that you want to share, which subject should be focused from now for preparing for GATE and the entrance test, or you can say other test for IITs? Yes. So as Kamal mentioned, data structure is one of the important subject. Then you should focus on maths. Engineering maths is a very crucial. Engineering maths and aptitude. It is very easy but very scoring.
So it is almost 25 marks. 25 marks for the data structure algorithm things, and 25 for this maths and aptitude. So you can easily score 50s and you can land into the best IITs. So if Okay. you need to just score 50 marks to get into the IITs out of 100. So you can imagine only 17% of the total population get the scorecard for the after giving the gate. So I would say that only 5,000 people would prepare like give full potential. Otherwise, all the people are just the fees is just 1,500 rupees. So ऐसे ही कि दे देती है गेट दे देते हैं कैसा पेपर होता है उसे देखने के लिए ही सब लोग आते हैं. So competition is less. Your best chance to get into IITs. Please go for it. Yes, so the students who are planning to get admission in IITs and some reputed institutions in India for masters, even if whether you are preparing for placements, then also data structure, algorithm, aptitude are most important subjects. Whether we are going for the competitive coding, then also this data structure, algorithm, and your logic building skills, right? Those are very much important. So now next, Aisha. Aisha, are you here? Yes, ma'am. Yes. So can you share your experience? Ma'am, but I have prepared for IELTS, not GATE. Nah, it's fine, it's fine. Now, like I think so, both the students who got admission in IITs have completed. Now we are working for out of India. So you can share. Yes. Good afternoon, all. And I'm Isha Bhagat, and today I will share my experience about this whole journey of bachelor's and after that, that is about master's, that how to get admission in prestigious universities in other countries. So as you all must be known that we are for going out other countries, we don't need to give GATE. So you can prepare, you can focus on IELTS or GRE exams, and for that you should start your preparation from third year itself, because this need time, hard work. We need hard work in each and every exam. So this takes minimum 3 months time in IELTS, and getting good bands is in your hands. In that there is no such competition for getting bands. But yes, apart from this IELTS exam, you should keep your academic results in college up to the point, because that plays an important role in getting admissions in prestigious universities. Otherwise you will get admission in any colleges, but if you want to get admission in some reputed universities, then you should focus on your academics also. And in subjects, as mentioned earlier, that data structures and algorithms, they are not important in India only, but their importance in other countries is also at top. So in masters also, the data structures and algorithms, and in programming languages, either Java or Python, you should know it, because I am going to Canada. So in Canada, they prefer Java or Python. So you should keep your concepts very clear. Okay, so as Aisha suggested that subjects are as much as important with the competitive examination, fine. Whether you are appearing for like IELTS or GRE, your subject knowledge is really very important whenever you are going outside of the India. Aisha, can you share importance of LOR and all in this process? Yes, LOR is basically letter of recommendation, and that you have to get from your professors. So it is important, because this letter of recommendation, based on that only your application will be taken out further. If your LOR is not proper, if your professors will not give you good remarks, then your admission will get cancelled at that stage only. They will not, even though you have scored 10 CGPA,
But if your LOR, your professors doesn't give you good remarks, then also your admission will get cancelled. So it is mandatory to be in discipline, and yes, to keep up your academic results. Okay, so basically, whenever you are planning for higher studies in abroad, then the most important thing that is selection of subjects. So subjects you must prepare. Then you need to go for GRE and ALTES. Then the LOR process must be good, and you must know that in which area you want to get the admission. Fine. So basically, in master's degree, many branches will be there. So Aisha, can you give some insight of that? Like how to select the course? Yes. So in masters, in whichever field you will do, you will have two options. Either it will be thesis based or either it will be non-thesis based. So if you want to go in research part, you want to write research papers and you want to do research, then you should select thesis based. And if you are not interested in research part and you want to go do projects and do internships, then you should select a non-thesis. And not every university provides a non-thesis with co-op option. Co-op is basically that you will get internship at the end of your masters. So and not every colleges provide you non-thesis option. So and we Indians majorly take part in non-thesis program, that is course-based program. In course-based program, we either get an internship or we have to do project in the under one professor of the university. So you should know your interest and you should select your courses wisely, because once you select, then if you want to change your course or program type, then that is very lengthy process, and not all universities provide you that. Okay. So this is what about the students who wants to student who wants to go for higher studies in abroad. Achal, are you available? Or we should go for other candidate? Okay, so till the time Achal joins us back, let's interact with the students who got placed in good companies with higher packages. So I would like to call Rushiraj. Rushiraj, are you available? Yes, ma'am. Yes, yes. Please share your experience journey to get placement in Victoria, I think so. It's Spectrally, ma'am. Hello. Am I audible, ma'am? Yes, 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 absolutely. Yeah. So basically, for those who don't know me, I just graduated technically this year in July, and I'm placed at Vectorly for the role of computer vision engineer. So the total the procedure was actually off campus. I didn't go for the on-campus placement because I wanted to go for the machine learning and computer vision field. So not most companies don't recruit you directly out of your bachelor's for these kind of roles. Typically, if you search for any qualifications in big tech companies like Amazon or Microsoft, they will state that either you need to have a master's or minimum 2 to 3 years of work experience. So if you want like placements in this kind of roles like data scientist or machine learning engineer or computer engineer, etc., like you need to apply off campus and to a lot many places. I got the job from LinkedIn. I applied to the job post just last August. So what happened was in the August 2020, we won the Smart India Hackathon Finals. So after that, I activated. This was the most important part. So I activated the LinkedIn Premium. LinkedIn Premium gives you a 1 month free trial. So basically, the main part for that is you can get insights like where do you stand with respect to your competitors. So basically, ma'am, can I share a screen for a minute? Yes, sorry. Can I share the screen for a minute? Yes, yeah, sure. Yeah. So like this was one of the main point. Yeah. So this is just a screenshot of like when I applied last year.
So whenever you activate the LinkedIn Premium feature, it gives you a high level overview of where you are with respect to the other candidates who applied for the same job post. See, this states that you are in the top X percentage of out of this many applicants. It's like 10% of 4,957 applicants. So what happens on the recruiter side is they will only cherry pick the top 10 or 25% of the applicants who have applied to that job posting. Now, if you and now this ranking is done totally internally on the basis of LinkedIn's algorithm. So it considers everything into the picture, like, oh, what are your skills? Basically, skills is what you list in your LinkedIn profile. You can also fake them, but like that won't last long. Then your current role, if you are doing internship somewhere, or if you have started a job at some place, whatever, etc. And your past experiences includes both your full-time experience, if you have, or internships, whatever you have done. So actually, this is the most crucial part. Whatever you do, just please update your LinkedIn profile, because that's the most important thing. If you don't have the premium account, just take the trial for 1 month. The first month is totally free, and if you get within 1 month, you can deactivate it anytime. Or if you don't get a job within 1 month, and if you want to try out, yeah, you need to pay a few amount. I don't know the exact amount. It's but something around 1,000 per month also. But that's pretty helpful to you. And one other feature of this LinkedIn Premium is that you can directly message whoever the person or the recruiter who posted this job. And that was actually turning point for me, because I actually directly DM'd the CEO of my company. I just stated that, okay, I am in the third year of my computer engineering studies, and I just basically listed my achievements. So I've done this. These are my internships, and recently we had won the SIH. So I put a link to our YouTube video, with the SIH interaction. So he was pretty impressed from that DM message itself, and then I actually conducted 2 to 3 rounds of interview, 2 technical rounds, and one was the HR point of view. So that eased out a lot of stuff for me. But apart from that, like, LinkedIn is one place. You can also apply for AngelList. So the top US-based actually startups, or Silicon Valley-based startups, actually go for AngelList, and the package is pretty high. Like, you can expect like 12 LPA plus CTC in most of the. This is fine. Like, you can check on your angel.com, and there are a lot of other companies as well. Just I found this website, Relevel. So this is the criteria is basically still a startup, but they offer you a competitive CTC of 14 to 38 LPA. So you can get a lot of opportunities off campus. I mean, if you don't get the job description in the on-campus companies, let's say if you want to go for a UI UX role, but there are no companies who are hired for that role on campus, and definitely you can apply off campus. But the only caveat is like there will be a lot of applicants. Like here I had like 5,000 applicants, and there were only 2 job vacancies. One was for intern and one was for a full-time role. So one of my colleague, he was actually a PhD pass out from IIT Madras or so. I don't remember exactly, but he got the job and I got the internship. So I did a 6-month internship over there. And then when my 8th semester started, like when I was full-time free, they gave me a pre-placement offer. So I started my job actually in March, and by this September I will have around 1 year of work experience. And like, keeping aside the machine learning stack for a while, you need to focus more on DSA, whether it's GATE or anything. DSA is the main distinguishing factor, because that would be placed in your interviews. That plays a main role. The first round would be based on your DSA only, solely DSA. And if you are going for a machine learning role, then they might ask you algorithms or theoretical explanations for that, whatever. But whatever you do, DSA plays a major role every time. And if you are going for a SD perspective, I didn't apply for an SD role anywhere, but generally the trend is companies like, let's say Amazon, if you talk about large companies, Amazon, they don't care much about whatever projects you have done. I mean, you still need to have a decent, good quality projects, but they more care about your coding skills. So what happens is, let's say if you have a top star, like 5 to 6 star or 7-star rating on CodeChef, they will directly contact you. Like, you don't even need to apply on their portal. They will directly contact you through LinkedIn or whatever.
because the recruiters, the HR managers, they are always active on LinkedIn and they are looking for such talent. But if you don't have like 5 to 6 stars, and but let's say you know internally that you are a pretty good coder and you can crack these interviews, you should definitely apply on their portal itself. And just the one main thing that you need to keep in mind is whatever happens, just keep your resume one page, because there is this thing called ATS. I don't know the exact full form, but those are resume screening softwares. So basically, when you have a resume length more than one page, it imparts you negative points. Because whatever happens, like whenever you apply to any job portal, the job portal has algorithms on its backend which do the internal evaluation and ranking, like similar to what LinkedIn does, of its applicants, and it only shows the top 10 or 25% of the application pool to the HR managers, and those HR managers will cherry pick from those top 25 students. So even if you are pretty smart, even if you know all the algorithms, but if your resume is not proper, and if the ATS marks something, if it flags something, if it's a 2-page, then you will be pretty behind in the rank, and eventually you will not get even a call for the interview. And this HR, and why this is important, because those HR managers, they are basically a non-technical person. They don't really know you, or they can't judge you basically from your resume, that are you technically strong enough. That can be assessed only during your interviews. So that is very crucial to at least get an interview call. Then you can impress the technical recruiter, oh, I have done these projects and this is my rank, etc., etc. But resume is the main part. So just don't keep your photos in the resume, because when I talk to many HR managers, like they don't like that. Just keep it simple, one page, list down all the things, and yeah, I think you're good to. But just apply off campus everywhere. You have a lot of websites, AngelList and Relevel, basically LinkedIn, and you still got 1 year left. I think you are in 5th semester, right? So you have the whole 5th semester and the whole 6th semester to prepare for DS and everything. So you can do that. There are many courses if you have not done that, but basically focus on HackerRank, Codeforces, whatever you do. And the last part is your GitHub profile. So after your LinkedIn profile, the GitHub profile is what matters the most. The big tech companies like Amazon, and they don't care about your GitHub profile. But whenever you are, because they are basically hiring in thousands. I think Amazon hired this year around 250 to 300 students from Gujarat itself. But that does not go for startups. Startups are relatively small. Yeah, they will pay you a good, competitive package, but they will expect that you know a lot many things rather than just data structures, algorithms, like good projects and actual software development or machine learning algorithm, whatever you say, those skills. So just distinguish between them, like wherever you are applying. If you don't have good projects and other skills, and I think it would be better if you just stick to DSA and apply to these top-notch companies. And if you think like you know software development and you have many projects, or even the machine learning field, you have good decent amount of projects, quality projects, then I think you are good to apply for startup as well. But whatever happens, DSA would be your goal part. So, like as Rushiraj shared that all the things which are required for placement preparation. Fine, Rushiraj has taken the placement through off campus, and he got the 15 LPA package in Vectorly. So basically, the things that those he has covered, that is related to data structure, that is related to LinkedIn profile. Yes, other than that, CodeChef profile, right? That yes, ma'am. Yes. So those that's actually one of the major thing, because I recently saw one of a guy's profile. Like he had this LinkedIn profile and he got selected for Amazon. But you know, in the LinkedIn, wherever you go for the LinkedIn profile, you have a highlight section. So basically, that guy, what he did, he just posted all those his profile links. Let's say he had like around 4 to 5 star on CodeChef, and so basically he highlighted all of those things as posts on his highlight section. So whenever a recruiter goes to your profile, that will be the first thing that he will see. He will, of course,
check your post and all, but that highlight section, the about or like that is the main portion that actually attracts the eye. So Yes, so basically, this time we have collaborated with the Code Chef, and they have recently did the orientation program for our students, like Charuset students. yes, And in that collaboration, they are planning to organize various events of competitive coding on every monthly basis, so students can take part, and the main goal of this is only to attract the giant companies like Amazon, Google and Microsoft, because on the basis of Code Chef, 5-star, 6-star and 7-star, they directly contact the students, as Rushiraj said, right? yes, ma'am. Yes, so in morning session also I have discussed the same regarding Code Chef, and Jaisal ma'am has shown you that the rating profile, right? Rating page on the Code Chef portal. So, and if you will go for the competitive coding, then also DSA, that is the data structure, is the most important thing that you must focus, like in previous semester you have already studied that subject, but not only up to subject it is important, but for all your whole journey, it is really very important subject. So as students, all the students which are already passed out, whether they took the admission in admission in good university, or whether they are placed in good companies, they only suggest that must to focus on programming and data structure. Thank you, Rushiraj, for sharing your experience. Now I would like to invite Tirth. Yes, Tirth, are you with us? Yes, I'm here. Yes, so please share your journey to get the digital offer from TCS. Yeah. So hello everyone. Hope you are doing well and fine. So first of all, quick intro of myself. So my name is Tirsa and working as a full stack engineer at Tata Consultancy Services. So talking about the overall placement journey. So like Rushiraj explained it very well. Like nothing to lack in that. But like yes, for if you are going for the on-campus placement, like first is aptitude. So you have to very clear with aptitude. Like the things are that the thing is that am I getting double or No, no, it's fine. okay, okay. So the thing is that aptitude. So the question is really easy, but it takes time. So there are some formulas or some methods that you need to know so that you can solve in like what 30 or 40 seconds. So the first thing is aptitude. Then second is the interview. So in the interview, it really depends on how you speak, your communication skill, and how you deal with it. So and they are majorly asking about the projects, like what is this project all about and what are the challenges and what is the conclusion of the project, and after that there is an HR interview. So for my journey, first I was selected in Crash Data as an site reliability engineer, and after that I was selected for the TCS digital profile. So for the digital profile, I got through Code Vita. So if you have cleared like in Code Vita like what 2 or 4 questions, so you will get an interview. And what they are looking for is something that is unique in market, like machine learning, as Rushiraj said, that cloud computing is there, data analytics, so that you can stand out from the other students. So my specialization was in cloud computing, and I did a couple of internship also in that. So yeah, interview went well, and they selected me. And after that, I have completed internship 4 or 5 months in that, and joined TCS as a full-time employee. So that's all. And yes, DSA is must, like competitive programming. So if you are if you guys are in like fifth semester, right? So you need you have a whole time, like a whole 1 year or 2 year. So do that. It will definitely help, whether it will get masters or placement. So yeah, DSA is must. So and all the best for your future.
Okay, thank you, Tirth. So, Tirth got placement in TCS Digital through the CodeVita. TCS every year hires two type of placement opportunity, or every time gives two types of placement opportunities to the students through the CodeVita and through the NQT. NQT, that is National Qualifier Test, fine. And this CodeVita is nothing but one coding competition in which some problems will be given and you need to solve those problems on the basis of competitive coding, fine. So Tirth got the digital offer, that is of 7 LPA. And another one candidate with us, Siddharth Prajapati, he also got the 7 LPA package in TCS, but through NQT, that is National Qualifier Test, fine. So as Tirth suggested that in coding competition, competitive coding is required, and then whenever you are appearing for aptitude, you must have the skills to solve every question in maximum 30 to 40 seconds, which requires daily practicing of the aptitude. And as we have discussed in morning that we have contact a really very good person who is specifically working on this direction, that is on aptitude for you guys. And we are keeping the session in 5th semester so that you get the time to do more practice. Like at the end of the 6th semester, the placements will get started, fine. So for that reason, the aptitude is must, and then comes to the interview. So if you want a good package, then one technology that is currently like demanding in market and unique in market, so that is related to either cloud, AWS, then machine learning. If you are good in some IoT side, if you are talking about security, then cyber security or blockchain and something like this, right? So you should focus on those things. Now I would like to call Siddharth. Siddharth, are you with us? Yes, yes. Am I audible? Yes, you are audible. Hello, ma'am. Hello. Hi. Good afternoon. I am Siddharth Prajapati. I am currently working as a system engineer at TCS. As we all know, that TCS hire fresher from two way, NQT and CodeVita. Like as ma'am said, I was hired through NQT. In NQT, there are 3 steps. Like first NQT exam, then additional coding round for digital, and the last interview. Like discuss like NQT. First NQT exam, in which aptitude and coding round are there. You can prepare like aptitudes from India Bigs, but in aptitude you need to be very quick because they are going to like give you less time to and you to solve like more problem in less time. And for coding round, you can prepare from LeetCode, Hacker, and many more. But I would suggest first go through all the previous year coding questions from NQT and CodeVita, because their pattern are mostly similar, and for every year this help me very much. And I'm not 100% sure, but in coding round they are not going to ask advanced topic like sliding window, dynamic programming, so I suggest emphasize more on basic topics like list, string, and all. And now after that, now additional coding round for digital, their layer going to be similar as NQT, but here you need to solve both coding question with all the test case to advance to digital interview. So here is this is the hardest step in which most of them are eliminated. And then last, in interview they're going to ask like normal basics, data structure, ops, database, projects, and sometimes networking also. As this said, like I'm not sure, but from my experience, they are emphasize more on good projects like MLDL and your project knowledge. So before your interview, go through all projects, and if possible, explain your project with the help of diagram or code. And one last tip for coding round: if possible, use another language other than Python, because their Python compiler is very laggy and sometimes it stops working. So use Java or C to solve problems. That's all. Thank you and good luck. Yes, thank you, Siddharth, for sharing your experience. So basically in competitive coding or coding round of any of the companies, you will get the option to select your own language, fine. So you either opt any one language from now onwards and start practicing on that particular language.
As Siddharth suggested, you can go for C, Java. The reason for selecting or opting this language, like whenever you want to do something which is not available directly, right? On the online platform of those companies. Like recently from 18 batch as well, many students were facing issues of compilation error. They are successfully compiling and successfully running the code in their own compiler, right? Either on, but they are facing the errors while using the platform of that company. So as Siddharth suggested, please opt one language for coding round. Like TCS hires for 3 types of packages: Ninja, that is 3.6, Digital, that is 7, and next, that is Innovator, that is 11 LPA. Fine. So last time we got 2 students for 7 LPA for Digital, and I would like that from this batch we got at least 1 student for Innovator. So start preparing for the same from now only. Now I would like to call Tanuj for sharing his experience. He got, I think, so admission in University of Maryland or something. Tanuj, are you with us? Yes, he got admission in Maryland, which is one of the top 10 universities in the world. Let me see if he has joined. He has actually joined, but I Yes, can't he's see here. his name. Yes, he is here. Let me call him. Tanuj, you are not audible. He is joining again as he is not audible. Okay. Yes, ma'am. And ma'am, one more thing. Recently, even Amazon has started hiring for machine learning roles through hackathons. Just last Sunday, me and one of our 18 DCS batch junior, Mohan Patel, we had taken part in that. So actually, for the top 3 winning teams, they offer internship and as pre-placement interviews directly. Okay. So please share the details so that I can share details with 5th semester students. So next time, whenever this type of things will come, they can also take part. Yeah, sure. Okay. Tanuj, now, okay, just a minute. Hello. Yes, Tanuj, now you are audible. Yeah. Hi, good afternoon, everyone. Yes, so as Jason ma'am and Khush ma'am mentioned, I got an admit into the University of Maryland at College Park, which is the main campus of the University of Maryland system. And so I'll be pursuing a master's in robotics there. And yeah, so I'll be starting from 30th August, my class start, and I'll be leaving on Thursday. And for that, to prepare, I obviously gave the GRE and the TOEFL. Because of the COVID condition, the GRE was optional for many of the universities, and I think it was also option for my university. But So Tanuj, what do you think आपका admission किस basis पे हुआ है? So so your it GRE actually score or your CGPA or something else, papers so or what? it is difficult to say. Basically, the way admissions in US universities, the way they work is they follow a very holistic approach. So they look at everything together and not focus on one thing in particular.
there are universities which only look at one thing, like there is a University of Southern California, which is in Los Angeles. Like that university only looks at your GPA, only at the GPA, no, not on GRE, not on your profile, not on your projects, only on the GPA. So if you have a good GPA, and a good GPA, which means like 9.5 and above, or around 9.5 plus minus 0.2, something like that, then you can get there. So but majority of the universities, they follow a very holistic approach for their admission process. And if you are applying to a good university, more often than not, they'll want some research work from you. So if you have a good research background, then you'll have an edge over the other competitors or the other students who applied with you. So my goal is to get into research, and for that I was working with a professor at IIT Bombay for the past 7 months. So I had that in my profile, and I had one more internship. The first internship which I did when I was at Charusat, I did at Ahmedabad University, again with a professor, which was also a research internship. So that like the good universities are always research based universities, and they'll always look for some research background when they look at your profile. I And think your work at IIT is recognized there because yeah, जहाँ तक मुझे पता है, you don't have any research papers, right? yeah. So But you have experience of internship, research internship. yeah, so I started working with the professor at IIT Bombay in January, and I completed in July, which is when we submitted the paper that we. So the work I did there, we wrote a paper and we have submitted, which is currently under review. And so I didn't have any paper when I applied, obviously, but but I applied to 7 universities in the US, and all of them I applied with a research point of view, and because the good ones are always research based. So, and that's what they follow there. It's the way the environment there is always research based. So that's how I did. And uh, you'll have to probably give GRE. TOEFL is obviously compulsory, TOEFL or IELTS. GRE you'll have to give. It's better to give it because obviously you'll have an edge over the people who don't give it. So that's one thing you can follow. Like give GRE and get as much marks as you can. It won't be a deal breaker, like because they look at your overall profile and not only on the GRE or not only on the GPA, but the overall profile. But uh, everything adds to the total, right? So yeah, and I think that's Our one of the faculty member who was here, Rutu Atalia, she also got admission in the same college as yours. She was also not having kind of much research papers, but what helped her was she was first in the university in BTech and in MTech also, in Masters also. GRE score was also okay, more than 300, which is required, but her academic excellence helped her. yeah. So it's not for her. In her case, it was not research. It was not. It was not some kind of internship but her academic experience. So it depends on university to university. Yeah, so I hope students must first decide in which universities they want to target, and then start exploring what they need to do from now only. Yeah, definitely. So one thing I'd like to add is that most of the students go for some kind of consultancies for the admission process, or to figure out which university they want to apply to. I didn't do it because it's not worth if I am from Ahmedabad. So if you are in Ahmedabad and if you get a consultation, it will cost you the famous ones cost you like 50,000
6,000 around rupees, but it is like it's basically very bad, the entire process, because they don't give you personal attention and they don't know what you want to do in the future. Like even if you tell them, they'll suggest you the universities they have tie-ups with, or the ones they like, or the ones are easy to get into, so that they can advertise on your name. So I'll suggest, don't go for any consultancies. Do the entire process yourself, write the SOP yourself, and research the universities and the programs yourself and the professors yourself. So uh, one of the things when you're applying to any university in the West, Europe, Canada, or I don't know about Canada, but Europe or US, is you have to target professors, because basically you will be working with the professors there throughout your time when you are there. So I currently, I applied to 7 universities in the US and 2 in the Germany, and I basically applied to these universities because I like the professors. I like particular professors there and the work they were doing, and I wanted to join their lab. So I'll actually be joining a professor's lab before even I start my classes, in University of Maryland. So do it yourself, because the consultancy work won't be like up to the mark. I mean, What it kind won't be of research has been done by Tanuj? Let me tell all of you. Like उसने बोला कि consultancy जो जिसके साथ collaboration होगा वहाँ उस colleges में भेज देगी. जहां तक मेरी नॉलेज है, तनुज एंड वन मोर स्टूडेंट उसके पहले था, जो 2 क्वालिटीज इन स्टूडेंट्स में अलग है. उनका क्या है कि दे नो हमें रोबोटिक्स में जाना है, एंड देन दे एक्सप्लोर, सर्च और गूगल वॉट एवर की उसमें बेस्ट यूनिवर्सिटीज कौन सी है और लैब्स कौन सी है. अब अगर मुझे इस लैब में वर्क करना है तो मुझे किस प्रोफेसर के साथ काम करना पड़ेगा और उस प्रोफेसर को अप्रोच किया, राइट? ऐसा नहीं कि मास्टर्स करना है, ओके ये अच्छी यूनिवर्सिटीज है, बट इन लोगों का जो यूनिक चीजें थी, मास्टर्स करना है, कौन सी फील्ड में करना है, उसके टॉप प्रोफेसर्स कौन से हैं, कौन सी लेबोरेटरी टॉप वर्ल्ड की टॉप है, और मैं उसके साथ कांटेक्ट करूं, उसमें काम करूं या उसमें एडमिशन लेने का ट्राई करूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना है. तो इतना स्पेसिफिक मतलब इन लोगों को पता था. और अगर ये चीज नहीं मिलती तो आई डोंट थिंक तनुज तुम कहीं पे भी एडमिशन लेते, तो तुम शायद यहीं रहते 1-2 साल यहाँ कुछ करते एंड देन फिर तुम जाते, बट जहां तुम्हें एडमिशन लेना है वहीं लेते, राइट? हाँ मैम. सो लाइक कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट्स अ लॉट ऑफ money obviously, and obviously 2 years is a lot of time. So don't compromise के यहाँ मिला है तो अभी ले लेता हूँ. I mean, you will get frustrated and your time will be wasted, your money will be wasted, and you will get frustrated, which is the biggest point. And like after 2 years you won't have anything to do basically. So don't settle for a bad university. Like if you don't get into I got rejected from 4 universities, I think. I applied to 9 and I got rejected from 4 of them. Then there were some universities where I got a scholarship, but I didn't. The other one was better. So like University of Maryland, I got into New York University and I was offered a $12,000 scholarship or something, but University of Maryland is better. So I accepted the Maryland admission. So don't settle for a bad university, and if you don't get into the university you want to go to, then do something here. Join, work with a professor on some project, build up your profile, and then apply next year. A friend of mine got rejected from 11 universities last year, and he's from PDPU and he has a GPA of 9.6 or 7, and he applied to 11 PhD programs and he was rejected with a 9.7 GPA. So that happens sometimes, but so he didn't settle. He worked here at the Indian Institute of Plasma Research or something for more than a year, and he has now 3 or 4 papers, and now he got into a university in Netherlands, Eindhoven, Technical University of Eindhoven. So
don't settle for bad universities. And one last thing I want to add is the universities, the programs that you read about and you research about. After doing that, what you can do is go to LinkedIn, open LinkedIn, and if you open that university page. So for example, if I go to LinkedIn and open University of Maryland page, it will have an alumni section on the official page, and from there you can find the students who are currently enrolled in that program or were a part of that program, the passed out students, and you can talk with them. How was the program, or how is the program currently? How are the professors like, and will it meet your requirements? So I did that with, like, I talked to basically 50-60 students. I sent a message to 50-60 students. I talked with maybe 20 or 25 of them of different universities, and discuss the program with them, discuss the professors with them, because basically the thing is, the people who are actually there, no one can give you better advice than them. Like the consultancy people sitting in India cannot be a better guide than a student who is currently studying or working there, right? So don't ask someone for advice if he or she hasn't already done that. I mean, I cannot give you advice on jobs because I had never applied for a job, so I don't know anything about it, and you shouldn't believe what I say. But if I'm saying about admissions, I did a lot of research, and so I can say with confidence that this is what worked for me. Maybe it won't work for everyone, but you can at least try these things. So these are the things that helped me get admission to a few places. And yeah, and also contact, after you get an admission, contact the PhD students of the professors you want to work with, because the professors are basically so busy, they won't reply to your email. So reach out to the PhD students that they have at the lab, and you can get a position at the lab to work with the professor on different projects. Yeah. Okay. Thank you, Tanuj, for sharing your experience and Ma'am, guiding your students. Yes. Meet ask a question in a chat. Yes, we will take the question answer after completion of the solve. Okay, so now yes. Ma'am, so I have to leave in 5 minutes. Is that fine? Okay, thank you, Tanuj, for joining us. No problem. You can thank you for sharing your experience. Yeah. And all the best for your future. Yeah, thank you, ma'am. Thanks a lot. Thank you, Jason, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Yes, so here with us, Mihir Godasara. He has another achievement. Till the time we have interact with the students who have given GATE, who have given GRE, IELTS, TOEFL for higher studies. This is another path for the higher studies that's achieved by the Mihir. So he has prepared and he has given CAT and get success in qualifying and getting admission reputed institution. So I would like to call Mihir for sharing his experience and sharing how he achieved this goal. Yes, Mihir, over to you. Thank you for the introduction, ma'am. Am I audible? Yes, Mihir. Okay, ma'am. So basically, when the idea of doing an MBA actually came in the third year of engineering. To be honest, it is very late to decide to do an MBA in the third year. So if you already have the plans, the first advice to the students will be that decide what you want to do in second year itself, when you are in the second year of engineering. And now I see that the students who are participating are from the second year. So if you can really decide in the second year that you want to do an MBA or you want to do MTech or go for a job in the second year itself, that would be a really great benefit. Now talking about my journey, in the third year of engineering, I decided that I want to go for an MBA. So I started preparing for my CAT and other competitive exams, and eventually even at the same time there was lockdown.
So to be honest, lockdown was like a benefit for me, because staying home, I used to get time to manage my engineering and prepare for the CAT and other competitive exams. So the thing about CAT and any other competitive exam is that you need perseverance. If you are not prepared for the long go, then you can't get it. So I used to study like 7 to 8 hours just for the preparation of CAT. And as and when I already set my target that I want to reach at least a college of this tier 1 or maybe the Ivy League. So that was the target that I fixed for myself, and I used to work for that target only. I never aimed at anything less. So working for 7 to 8 hours daily for the CAT and all, at last I was able to reach that. But even when I reached at the end, while giving the CAT, I didn't manage to get my target. I targeted around 95 percentile, but I reached only to 90 percentile. But even after CAT, when you entered into the MBA world, when you decide into MBA world, currently people don't have the knowledge or the details of that. Currently, MBA is like only the top IIMs like IIM, ABC. That is what the good colleges for MBA are. But it is not actually true. You have got a pool of colleges. I would say you got 30 good colleges in India where you can do an MBA. And CAT is not the only exam for getting into that college. There are several exams. I gave each and every exam for the preparation of my MBA. I gave CAT, I gave SNAP, I gave IIFT, I gave Z, I gave MyCAT, I also gave, I gave NMET for 3 times. There are many exams for which there are many trials are also available. So the main thing is that you need to stick till the end. MyCAT was my last exam that I gave. And after CAT, MyCAT was held around 1.5 months later to the CAT. So you need to stick till the end if you want to get the best college you want. Now talking about MICA, MICA I would say it will come in top 15. And MICA is specifically for marketing. So now, after now I have already been in MICA for like 2 months. And once you get into the postgraduate, the life that you are currently living and the life that I am living is totally changed. You need to manage your sleep cycles, and that is only for like 3-4 hours a day you will get to sleep. That is my journey to the CAT. Now, if I give some advice to the time till you complete your engineering, I realized everything after I completed my engineering. So first advice will be, academics is there. Academics will be part and parcel of any course. But what extra do you have? Like participating in competitive exams or competitive competitions. Like if you are here for engineering, you have coding competitions. You be part of the clubs that the college have. That will add to your CV points. Because once you get out of the college, academics is the CGPA is just a number that you will be showing. The recruiters or the colleges for the higher studies are going to see what extra do you have. And that will differentiate you. So that is my first advice to the students that currently start working on getting some certification course, going into the competitions, winning the competitions, being part of the different clubs, participate actively in extracurricular activities as well, because that will really add weightage to your CV. And decide now what you want to do. You want to do a master degree, you want to do a job, or you want to do an MBA. So this is the right time to decide and start working on it. Because once you are late, you will. I probably feel that if I had a year more, I could have been in more better college. I might be in the Blackie IIMs, IIM ABC, the top IIMs. I could have been there, but I was a year short for that. So start preparing for from now itself when you have 2 years into the engineering. Otherwise, at the last, you are going to regret that. So that is the whole journey if I cut it in brief. I just want to correct Mir. That is important. Extracurricular activities are very important, not only in MBA. Even in foreign universities, if you see, yes, they see if the student has done social work or not. Because their social work is given very much importance. But what I want to correct is, if you say that it is this CGP or GP is not that much important, so some students will misunderstood it, and then they will what they will do, they will not focus on studies and will do extra activities only. No, that was not my motive. If that wrong message is given. Yes, maintaining
some like 7 up. Yeah, is maintaining important. a distinction is very necessary. Yes. If you are, yeah, maintaining a good, like above 7.5 is really important. You can't just say I have 5 CGPA and I have got Because this much certificates. Yeah. I have experienced this when I was in CSPIT. There were some students, they always used to told he was brilliant student, okay, and he never attended classes because वो extra अपना technical में था and वो coding वगैरह करते रहता था. And because of his less attendance, he got detained in the internals, and that's why marks automatically कम हो गए and CGPA कम हुआ. So he used to say there was a line he used to say marks में क्या रखा है something, okay. So then he applied for the MS, okay. But because of only CG was brilliant student, but because of the CGPA only 6 point something was a CGPA, he did not get admission in top universities of which he was deserving, but he did not get. So that's why everything has to be balanced. Yeah, means what I mean by that number is that it cannot be possible. Like even if you say the top colleges look at your 10th percentage, 12th percentage and CGPA. So if even somewhere if your 10, 12th is less, you can balance that by even the CGPA also. So at least target of 7.5 is minimum requirement for any good college. Because academics, the reason we are checking 10, 12th and CGPA is that how consistent you are. So that somewhere also defines how good student you are. That is the reason that good colleges also check the CGPA and all. Okay, so here, thank you, Mihir, for sharing your experience for cracking the various competitive examination for taking admission in MBA and how to get the admission in that. So this is the another achievement from the DEPSTA students. So now I would like to call Achal for sharing his experience to get admission at USA. Achal, are you here? Yes, ma'am, I'm here. Yes. Ma'am, can I leave because I got an exam to attend? Yes, sure, Mihir. Thank you so much for joining us and thank you so much for sharing your experience. Yeah, ma'am, it was a pleasure. Hello? Yes, Achal. Yes, good afternoon, ma'am. Good afternoon. Again, good afternoon to everyone who joined. आप मेरी बात सुनने के लिए आज आप and thank you so much. I see 120 लोग आए, so I'll make sure to not waste your time and give you as much as good information I can. So, hello everyone, I am Achal Rajyaguru. और मैं अभी यूएसए जा रहा हूँ ट्यूसडे को. अभी फ्लाइट है तो फिर अभी दौड़ा दौड़ी बहुत हो जाती है. तो इफ यू आर गोइंग टू एनी फॉरेन कंट्री, मे बी लेट इट बी कनाडा और यूएसए, मेक श्योर आप पैकिंग कर लो, हफ्ते और 2 हफ्ते पहले फ्री हो जाओ, लास्ट में बहुत रश हो जाता है. ऑलराइट, सो I'll let you guys know my profile. I'll share my screen and show you कहाँ का admission मिला था, and I'll show you my profile as well. Okay, so is everyone able to see my screen right now? Hello? No, actually, it's not visible. Oh, we can't see it. Okay, just a second. Okay, is it visible now? Yes. Okay, so as you can see here, I applied to 10 universities and मैंने हर यूनिवर्सिटी को एक टियर दे दिया था. दैट वाज एम्बिशियस, टारगेट, सेफ, और लास्ट यूनिवर्सिटी उसमें एप्लीकेशन फी नहीं थी तो फिर मैंने उसमें भी एडमिशन दे दिया. तो फिर वो मैंने टाइम पास लेके, बट इग्नोर दैट. सो यस, ये मेरी कॉलेज यूनिवर्सिटी लिस्ट थी. ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी वाज माय ड्रीम कॉलेज. मुझे ओहायो के सीएससी प्रोग्राम में जाना था. इट इज कंसिडर्ड टू बी टॉप 15 टू टॉप 20 इन सीएससी प्रोग्राम्स. सो मगर उसमें मेरा सेट नहीं हो पाया. अपार्ट फ्रॉम दैट आई गॉट इनटू यूसी डेविस. I applied in the CS course, but I was denied admission into that. But उन्होंने मुझे मेल करके वापस पूछा कि we have an place in MSBA for you. So मैंने उसमें अप्लाई कर दिया and I got admit from that. Apart from that, UC Santa Cruz में मुझे NLP मिल गया था. NLP is Natural Language Processing. हम जितने भी conversational AI के projects करते हैं, all of that comes into NLP category. So I got into that.
फिर मेरी टारगेट यूनिवर्सिटीज में फर्स्ट वो सैन होजे स्टेट यूनिवर्सिटी एंड सेकंड वाज नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी. सो यहाँ तक की जितनी यूनिवर्सिटीज है नॉर्थ ईस्टर्न की उतने में ही मुझे जाना था, बाकी सब सेफ यूनिवर्सिटीज थी मेरे लिए. सो यस, ये मुझे इतनी यूनिवर्सिटीज में मिला था. इफ यू वांट टू टेक अ पिक्चर ऑफ इट, I will tell you how I got into these universities and I will also tell you my profile. Are you guys able to hear me? Am I audible right now? Yes. Yes. Okay. मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें एडमिशंस कैसे मिले और मेरी प्रोफाइल कैसी है. तो फिर अगर आपकी प्रोफाइल इस किसी कैटेगरी में आती है तो you guys can try into this. Okay. Okay, so शुरू करने से पहले I'll let you guys know on my background. मैं इतना भी वेल परफॉर्मर नहीं था अपनी कॉलेज डेज में. जैसे फर्स्ट सेम में जब मैं आया था तब मेरी मेंटालिटी ऐसी थी कि कॉलेज लाइफ ऐसे करण जौहर की मूवीज जैसी होगी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी, और फिर उसी में हवा में था. तो फिर उसमें फर्स्ट ईयर में मेरा परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा था. आई रिमेंबर माई फर्स्ट सेम CGPA वाज अराउंड 6.5 और उसके बाद बहुत लोड आ गया था कि अब 6.5 है तो फिर सीरियस होना पड़ेगा पढ़ाई के बारे में. सो आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग. सेकेंड सेमेस्टर तक मेरा रिजल्ट 7 तक हो गया था और फिर थर्ड सेमेस्टर तक ऐसे ही एक रियलिटी चेक हो गया था कि अगर अभी पढ़ाई नहीं की तो फिर 3 साल बाद भी ऐसे TCS या फिर उस पर धक्के ही खाने के आएंगे कोई भी जैसी तैसी कंपनी है. सो आई गॉट सीरियस अबाउट माई एजुकेशन और उसके बाद मैंने थर्ड सेम से पढ़ाई स्टार्ट करना शुरू कर दिया था. आई बिलीव कि अभी जितने भी लोग आए, ऑल दी 120 अटेंडेंट्स, यू गाइज विल बी अप्लाइंग फॉर जॉब्स और गेट, और यू गाइज विल बी प्रिपेयरिंग फॉर गेट और योर स्टडीज इन कनाडा और अमेरिका. सो मैंने सब ट्राई किया है एंड आई विल टेल यू हाउ. मैंने गेट के क्लासेस भी ज्वाइन कर लिए थे, मैंने प्लेसमेंट के लिए तैयारी भी स्टार्ट करी, मैंने प्लेसमेंट पॉलिसी भी साइन कर दी थी. और प्लेसमेंट जब आने वाले थे, जब क्रेस्ट डेटा का इंटरव्यू था, तब मैंने जेसल मैम को फोन किया था कि मेरा अभी नाम निकाल देना, आई एम प्लानिंग फॉर हायर स्टडीज. So I'll let you guys know in about my background. So basically I am a software developer. मैंने थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर में जितनी भी इंटर्नशिप्स की, all were related to software development. My first internship was in C# and then I got into Android development और उसके बाद I went into web. And my plan was to get a software development job after completing 7th semester. तो फिर कॉलेज कैंपस से ही जॉब लेने का प्लान था. But after that I wanted to get a master's degree, so I started GATE class. पापा के साथ जाके वडोदरा में ICE करके, I believe कमल भी ICE में था. It was a really good class. तो ICE में जाके फीस भी भर दी और क्लासेस भी स्टार्ट कर दिए. और उसमें भी जब से 3-4 महीने हो गए, प्रैक्टिस प्रॉब्लम स्टार्ट करना शुरू कर दिया, मुझे पता चल गया भाई ये नहीं होगा मुझसे. जैसे ही गेट के क्वेश्चंस देखे तो मुझे बहुत डिफिकल्ट पड़ रहे थे और मुझे उसमें इंटरेस्ट भी इतना आ नहीं रहा था. तो फिर मैंने वहीं पे सोच लिया कि अभी मुझसे गेट नहीं होने वाली. तो मैंने क्या किया, मैंने फिर अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूजुअली क्या प्रोसीजर रहती है कि जितना हो सके, इफ यू गाइज वांट टू अप्लाई फॉर ऑन कैंपस जॉब या फिर नॉट ऑन कैंपस, इन कैंपस प्लेसमेंट्स, मेक श्योर यू नो योर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम. क्योंकि अगर डेटा स्ट्रक्चर आ जाएगा तो फिर सब हो जाएगा. एक लिंक लिस्ट भी अगर रिवर्स करने का फंडामेंटल्स आता होगा, लिंक लिस्ट का, स्टैक का, 3-4 डेटा स्ट्रक्चर्स मेन है. हैश मैप भी सीख लेना और बिट मैप भी सीख लेना. इन सब से कैंपस प्लेसमेंट फूट जाएगी. इसलिए अगर इफ यू वांट टू स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट राइट नाउ. जितना हो सके डेटा स्ट्रक्चर को घोल के पी जाओ, इट विल हेल्प यू अ लॉट. डेटा स्ट्रक्चर ही यूजुअली पूछते हैं. तो ये बात हो गई. तो ऐसे मेरी प्रोफाइल थी, सब थोड़ा थोड़ा करके ट्राई कर लिया था और उसके बाद काफी टाइम लगा. जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, फिर तब पेरेंट्स से बात की कि अब मास्टर्स ही करना है तो फिर बाहर जाके ही करते हैं. तो फिर उसमें तब मैंने अमेरिका डिसाइड किया था. एंड आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन इन 7th सेमेस्टर. तो जब 7th सेमेस्टर में जब एप्लीकेशन को 3-4 महीने थे, तब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी. एंड बाय दैट टाइम आई हैड टू अप्लाई फॉर GRE, फॉर TOEFL. आई हैड टू प्रिपेयर माय SOPs, LOR एंड लॉट ऑफ थिंग्स. यस मैम. प्लीज स्टूडेंट्स को ये भी बताना कि बिकॉज यू आप एंड टाइम पे आपकी आंख खुली कि मुझे ये सब करना है. हाँ. यू वर वेरी मच वरीड अबाउट योर प्लेसमेंट, योर करियर ऑल्सो, so that these students start preparation earlier. हाँ मैम, आता हूँ. हाँ. अपन टाइम लेके बात करते हैं. हाँ. ओके. तो I'll tell you guys what happened after that. मेरी प्रोफाइल के बारे में अगर आपको कुछ अगर मैं हाईलाइट कहूंगा तो ये है कि मेरी प्रोफाइल बहुत एवरेज थी. एवरेज इन द सेंस, मेरे CGPA जब मैंने एप्लीकेशन स्टार्ट की थी, I'll tell you the application timeline if you want to apply.
मैंने सिर्फ यूएस यूनिवर्सिटीज के लिए की थी, सो आई नो अ टाइमलाइन फॉर यूएस यूनिवर्सिटीज, बट आई मे बी इसमें से कुछ शायद कनाडा या फिर जर्मनी के लिए भी काम आ जाए. सो आई कम टू द टाइमलाइन प्रोसेस की कब काम स्टार्ट कर देना चाहिए या फिर कब कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी चाहिए. बट आई टेल यू मेरे साथ क्या हुआ. सो मेरा डिसीजन था कि मुझे अगस्त में मैंने ये डिसाइड किया कि अब जाना है. और तब तक अच्छी कंपनीज जो थी, जो टॉप 3 कंपनीज आती है, क्रेस्ट डेटा एक आती, फिर एक जेवियो करके आती थी, वो अच्छा पैकेज देती थी. तो फिर उन सब की भी प्लेसमेंट हो चुकी थी. और उसके बाद हुआ था कि अभी जीआरई देनी है. और जीआरई जब मैं दे रहा था तभी कैंपस प्लेसमेंट स्टार्ट हो रही थी. और उस टाइम भी काफी ऐसा प्रेशर था कि अगर जीआरई में स्कोर अच्छा नहीं हो या फिर अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं मिला तो फिर क्या होगा. और ये सब चैलेंजेस भी आएंगी. मगर मेन पॉइंट पे आता हूँ. मेरी प्रोफाइल जब मैं 6th सेमेस्टर में था तब मेरी सीजीपीए थी 8.02. एग्जैक्टली 8.02 थी मेरी सीजीपीए. 7th सेमेस्टर का आते आते वो हो गई थी 8.24. ओके. और मुझे कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि 8.24 पे मुझे कोई खड़ा रहने देगा, क्योंकि मेरे टाइम पे क्या हुआ था कि फुल बैकलॉग बढ़ गया था. जो 2020 एस्पिरेंट्स थे, फॉल 2020 एस्पिरेंट्स, वो तो थे ही, और मेरे साथ फॉल 21 के भी एस्पिरेंट्स आ गए थे. एंड माई कॉम्पिटिशन वॉज नॉट जस्ट माई क्लासमेट्स, मगर टॉप यूनिवर्सिटीज इंडिया की भी, बाहर की भी. और अच्छी यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम कॉम्पिटिशन चाइनीज और जापानीज और इंडियंस के साथ ही होती है. तो टॉप यूनिवर्सिटी में ये बहुत प्रॉब्लम होता था. और मुझे पता था कि अगर स्कोर या कुछ अच्छा नहीं हुआ तो फिर लग जाएंगे अपने को कोई अच्छी एडमिशन नहीं मिलने वाली, वहाँ की जाके पारुल में ज्वाइन करना पड़ेगा. मुझे ऐसा स्ट्रेस आ गया था कि वहाँ जाके भी पारुल लेनी पड़ेगी. बट अच्छा हो गया सब. एंड आई टेल यू व्हाट, मेरा टॉप एडमिट था नॉर्थ ईस्टर्न में. और नॉर्थ ईस्टर्न के साथ मुझे मिला था यूसी सेंटा क्रूज से. यूसी इज दिस यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सिस्टम. देयर आर अबाउट 7 to 8 कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटीज. जैसे फर्स्ट 3 तो आपने नाम सुना होगा, दैट इज बर्कली, लॉस एंजलिस, यूसी बर्कली, यूसीएलए, यूसीएसडी सब. तो फिर आई गॉट इनटू यूसी सेंटा क्रूज व्हिच इज नॉट द टॉप यूसी, मगर अच्छी खासी कॉलेज है. सो आई टेल यू कि मुझे कौन सी चीजों ने हेल्प किया था. ओके. सो एज आई सेड, मैंने अगस्त में जीआरई देना शुरू किया था. एंड बाय द टाइम नवंबर 2 आगे मैंने जीआरई दे दी थी. और मेरा स्कोर था 300. एग्जैक्ट 300 पे आके मेरी गाड़ी रुक गई थी. और 340 में से 300 इज नॉट एन इम्प्रेसिव स्कोर. इफ यू गाइज आर प्लानिंग टू गिव जीआरई, मेक श्योर कि आपका 305 से तो आप ऊपर करो ही, क्योंकि बेसिक 305 इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर 310 है तो फिर सोने पे सुहागा है, मगर मेक श्योर कि यू हैव 305. तो आई वॉज वेरी डिमोटिवेटेड कि अभी जीआरई तो है नहीं तो क्या करेंगे. मगर फिर टॉफिल भी दी थी. टॉफिल मेरा काफी अच्छा रहा था. 120 में से मेरे 110 स्कोर थे. सो माई जीआरई वॉज 300, माई टॉफिल वॉज 110, एंड माई सीजीपी अप टू 6th सेमेस्टर वॉज 8. मैंने जिस 10 यूनिवर्सिटीज में किया उसमें से 4 यूनिवर्सिटी आस्क फॉर 6th सेमेस्टर रिजल्ट, और बाकी की 6 यूनिवर्सिटी आस्क फॉर ओवरऑल 7 सेमेस्टर रिजल्ट. तो 7th सेमेस्टर तक मेरी 8.24 थी. ओके. तो मुझे काम कौन सी चीज लगी. जैसे मैंने नॉर्थ ईस्टर्न किया. अगर अभी आप नॉर्थ ईस्टर्न गोल करोगे, यू विल सी द एक्सेप्टेंस रेट. नॉर्थ ईस्टर्न में अभी 18% रेट है. तो फिर अगर 100 पीपल अप्लाई करते तो फिर ओनली 18 पीपल आर एबल टू गेट इन. और उसमें मुझे ले लिया. सो फिर आई वाज वेरी हैप्पी. मैंने ऐसा एक रिएक्शन वीडियो भी बनाया था अपना जब मैं एडमिशन चेक कर रहा था. एंड आई वाज रियली हैप्पी कि नॉर्थ ईस्टर्न में मिल गया. आई वेंट फॉर सैन होजे एट द एंड ऑफ द डे. बट आई टेल यू कि आपका क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए, कौन सी एप्लीकेशन टाइमलाइन रखिएगा, और प्रोफाइल कैसे चेक करनी है. ओके. सो द फर्स्ट थिंग विल बी टाइमलाइन. ओके. अब जैसे तनुज ने कहा कि ही इज गोइंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, तो अगर आप ऐसी टॉप यूनिवर्सिटीज देखो जो रिसर्च बेस्ड होती है, यूजुअली उनकी डेडलाइंस आर बिफोर December 15. मेरी जो यूनिवर्सिटी लिस्ट थी, इफ यू सी ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी, यूसी डेविस, यूसी सेंटा क्रूज और नॉर्थ ईस्टर्न, इन चारों की डेडलाइन वॉज बिफोर January 15. सो January 15 तक आई नीडेड टू हैव 1 LOR, और यूसी तो डाइवर्सिटी स्टेटमेंट मांगती है. So I needed to have 1 LOR, 3 LORs, then SOP, then I needed to have an resume, और उसके साथ एक diversity statement along with my GRE, TOEFL score, और बस ये 8 चीज़ें चाहिए होती है. अगर किसी को भी लिस्ट बनानी है तो make sure you write it down. 3 LORs, 1 SOP, 1 resume, 1 diversity statement, and हो सके तो अपनी एक वेबसाइट बना लेना. Make sure you have a portfolio. एंड इफ यू आर राइटिंग एनी रिसर्च पेपर, मेक श्योर कि आप वो अपना जो रिसर्च प्रोफाइल है वो भी आप अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर दे.
आई मेड अ वेबसाइट फॉर माई सेल्फ. मैंने एक अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट बना दिया था जिसपे अपने मेन प्रोजेक्ट्स डाल दिए थे, तो फिर ऐसा देखने में इजी पड़ा उनको. ओके, तो मुझे कौन कौन सी चीज़ों ने हेल्प किया उसके बारे में बताता हूँ. नाउ गाइस सी, द थिंग इज, यूनिवर्सिटी को आपके पास जज करने के लिए एक पेपर होगा जो होगी आपकी एसओपी. अब जैसे एज तनुज मेंशन, इट इज एन होलिस्टिक अप्रोच. उसका मतलब कि कोई भी एक चीज डिसाइड नहीं करेगी कि आपकी एप्लीकेशन कैसी होती है. हर चीज देखे में आएगी. जैसे योर जीआरई स्कोर टेल्स दैट कि आप पढ़ाई कर सकते हैं. अगर कोई एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दी तो जीआरई स्कोर क्या बताता है कि आप तैयारी करके उतना एनालिटिकल सोच सकते थे. टॉफल ये बताता है कि आपको इंग्लिश ठीक ठाक आता है, कि इट इज इजियर टू कम्युनिकेट फॉर यू. और आपकी जो मार्कशीट है वो क्या बताती है कि अगर आपके पास इतना सिलेबस था तो आप उसे कंप्लीट कर पाए थे. बट डज इट टेल कि आपके प्लान्स क्या है या फिर आप करना क्या चाहते हैं. तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच होता है जो मैंने दिमाग में रखा था कि आई नीड टू टेल कि मैं चाहता क्या हूं. तो एसओपी अगर आप लिख रहे हो, एसओपी मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. इफ यू गाइस डोंट नो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती है. जैसे आपकी अभी आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यू हैव डन, व्हाट आर सम प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप कितनी है, या फिर ऐसी 3-4 चीजें होती है, टॉपिक्स दैट यू नीड टू राइट डाउन. अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट, एक चीज ऐड कर देना चाहूंगी बिकॉज नाउ इट्स हाँ मैम. 30 so I have to leave. स्टूडेंट्स who जो कंसल्टेंसी के पास जाएंगे, कंसल्टेंसी वाले उनको एसओपी लिख के देंगे, राइट? मैंने हमेशा, तुम हो, तनुज हो, ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है दैट दे अप्लाई देयर माइंड इन राइटिंग एसओपीज एंड देयरबाय लैंडिंग इन गुड कॉलेजेस. Okay, so even if you are getting SOPs from consultancies, आप लोग अपना माइंड अप्लाई करो और एसओपी में क्या चाहिए उनको बोलो कि मुझे एसओपी में ये चाहिए, वो लिख के दे और हमने भेज दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए. Am I right? यस मैम. अच्छा, और मैम ने याद दिलाया. विद दिस आई वांटेड टू मेंशन वन थिंग. मैंने अपनी एसओपी में ऐसा मेंशन किया था कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट का स्टार्टअप आइडिया है, और मैंने वो स्टार्टअप आइडिया को अपने कोर्स के साथ लिंक किया था कि अगर ये कोर्स में जो 3-4 सब्जेक्ट ऑफरिंग है तो फिर ये 3-4 ऑफरिंग मुझे अपना जो स्टार्टअप आइडिया है उसमें हेल्प करेंगे. एंड दैट इज व्हाई आई वांट टू कम टू योर यूनिवर्सिटी. सो ऐसे थोड़ी रिसर्च करेगा अपने कोर्स के हिसाब से. और देयर इज वन मोर थिंग, अगर कोई कोर्स है जिसमें मैक्सिमम कंपटीशन है तो फिर वो है सीएस. जितने भी लोग देखोगे वो मोस्टली सब सीएस में अप्लाई करने वाले हैं. बट मैं कहूँगा कि आप थोड़ा कॉन्फिडेंस रख के कोई भी स्पेशलाइजेशन है, जैसे इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एआई देन कोई एमएससी इन एआई कोर्स होगा तो फिर अप्लाई इनटू दैट. इफ यू वांट अ जनरल अम्ब्रेला टर्म देन यू कैन अप्लाई इनटू एमएससी इन डीएस. या फिर अगर आपको डेटा एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स उसमें इंटरेस्ट है तो फिर अप्लाई इनटू डेटा एनालिटिक्स मास्टर्स. बट मैक्सिमम अगर आपको कंपटीशन देखने मिली तो फिर वो सीएस है. तो फिर ऐसा कोई गांठ बांध के मत रखिएगा कि अगर एमएस करना है तो फिर सीएस ही करना है, या फिर जो भी आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट हो उसमें जाइएगा. तो वो एक चीज बतानी थी. और मैंने अपनी एसओपी लिखने में बहुत टाइम लिया था. जैसे एक दिन क्या हुआ था, मैंने ऑलरेडी 2 वीक स्पेंड कर दिए थे अपनी एसओपी में, मगर एट द एंड ऑफ द डे मैं इतना डिसअपॉइंटेड था कि ये इतनी जेनरिक लग रही है और इसमें कोई मजा नहीं आ रहा. मतलब एकदम अगर इंटरनेट से डाउनलोड की हो वैसी एसओपी लग रही थी. तो फिर मैंने कंट्रोल ले करके पूरी रिमूव कर दी और मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट की थी. क्योंकि ये जो एसओपी लेटर है वो ही डिसाइड करेगा, इट विल मेक और ब्रेक योर फ्यूचर. ऐसा है. मतलब मैं एसओपी को इतना इंपॉर्टेंस देता हूँ क्योंकि मेरा जीआरई ना तो इतना वो बहुत एक्साइटिंग था, या फिर मेरे पास रिसर्च उतनी नहीं थी. उस टाइम पे मैं रिसर्च कर रहा था. आई वाज इंटर्निंग एज अ रिसर्च असिस्टेंट, सो दैट हेल्प्ड मी. बट यस, मेक श्योर कि आप एसओपी अच्छी लिख रहे हैं. सो कमिंग टू टाइमलाइन, अगर आपके पास टाइम है, राइट नाउ यू गाइस हैव टाइम. इफ यू आर इन 5th सेमेस्टर यू हैव मोर देन I guess 7 to 8 months. So 7 to 8 months is a really good time to prepare for GRE. So first check if your college needs a GRE, because when I was applying to some universities, ऐसा bold letters में लिख के दिया था कि we are not accepting GRE scores right now for fall 21 intake, so don't send your GRE score. So अगर आपकी लिस्ट में ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिसमें कोई अगर GRE नहीं दे रहा है या फिर कोई GRE नहीं मांग रहा है, so फिर you can avoid GRE. मगर अगर हो तो भी अच्छा है, क्योंकि लेट से अगर 2 स्टूडेंट है, दोनों की 8.5 सीजीपीए, दोनों का 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो फिर जीआरई से उनको आइडिया आएगा कि आप एनालिटिकली कितना सोच पाते. क्योंकि जीआरई डजंट टेस्ट योर फॉर्मूलाज और इट डज नॉट टेस्ट
कि आपको कितना याद रहता है, बट हाउ यू यूज नंबर्स। तो नंबर मैनिपुलेशन मैक्सिमम जीआरई में आता है। तो फिर मेक श्योर कि आप ऐसे रिसर्च करके भी जा रहे हैं। सो आई टेल यू माय टाइमलाइन मैंने कैसे किया था। द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज मेक अ यूनिवर्सिटी लिस्ट। यूनिवर्सिटी लिस्ट के लिए मैंने कंसल्टेंसी ली थी। कंसल्टेंसी के बिना भी काम हो सकता है, मगर मैं जिस कंसल्टेंसी के पास गया था वो सर्विसेज फ्री में दे रहे थे, सो फिर इट वाज नॉट अ लॉस्ट डील फॉर मी। तो फिर मैंने कंसल्टेंसी ली थी। तो कंसल्टेंसी को मैंने अपनी प्रोफाइल बताई कि चलो जीआरई में इतने, टॉफल में इतने, और मुझे ये कॉलेजेस में तो जाना ही जाना है। तो उन्होंने और 6-7 दे दी। तो मैंने नोटिस किया कि 6-7 कॉलेज काफ़ी एवरेज थी, या तो फिर इतनी अच्छी कॉलेजेस नहीं थी। तो मुझे ये एक डिसएडवांटेज लगा कि कंसल्टेंसी अपना तो फ़ायदा देखे ही। कंसल्टेंसी अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, वो आपके पास से एक फॉर्म भरवाएगी जिस पे आपकी साइन होगी, एंड वंस आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, दी कॉलेज विल पे कंसल्टेंसी सम अमाउंट। तो फिर उनको उस अमाउंट में फायदा दिखता है, तो फिर दे विल सजेस्ट सम यूनिवर्सिटीज जिनका उनके साथ टाई अप होता है। तो मेक श्योर कि आप अपनी खुद की एक लिस्ट बना रहे हैं। देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर जीआरई। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। यू रियली डोंट नीड अ कंसल्टेंसी, मगर अगर कोई क्लासेस है तो फिर आई विल सजेस्ट कि आप क्लासेस करें। और उसका मैं रीज़न ये कहूँगा क्योंकि आपके ऊपर कोई चेकिंग करने वाला रहेगा। जैसे जब मैंने जीआरई की प्रेप स्टार्ट की थी, मेरे पास थे 3 महीने। तो फर्स्ट मंथ में खुद घर पे बैठ के सब मैथ्स की बुक्स करता था और सब करता था, मगर वो स्पीड नहीं आ रही थी। बट व्हेन यू हैव अ टीचर की जो रोज नए 10 सम्स चैलेंजिंग दे, या फिर जो नया कुछ रोज एक वो प्रेशर रहता है कि आज 9 बजे उठ के क्लास अटेंड करने, फिर 2 बजे के बाद 2 घंटे का एक क्लास है, तो वो प्रेशर रहता है कि यू आर अंडर प्रेशर कि आज क्लास अटेंड करना पड़ेगा। सो फिर आई विल सजेस्ट कि कोई भी अगर कोचिंग हो तो फिर इट इज नॉट अ बैड डील। अगर घर पे भी हो सकता है, लोग घर पे भी देखे 310 312 मार्क लाते हैं, मगर अगर आपको है कि हमको कंसल्टेंसी में जाना है या फिर घर वाले कह रहे हैं, तो फिर इट इज नॉट अ बैड डील। जस्ट मेक श्योर कि आपकी कॉलेज लिस्ट में आप अपना भी इनपुट दे रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि कंसल्टेंसी ने कहा कि इसमें ले लो ठीक है तो फिर आपने ले लिया, ऐसा मत करना। So that is one thing I wouldn't suggest. So take up to 6 to 7 months to prepare for GRE. GRE 4 months में भी क्रैक हो सकती है। अगर आप जितना भी आपने 10th में पढ़ा था, ओके, 10th का अगर जितना भी सिलेबस है, लिटरली पूरा 10th का सिलेबस है, कुछ नया नहीं है। 10th और 11th का थोड़ा मिक्स है बीच में, स्टैटिस्टिक्स खाली 11th से, बाकी पूरा 10th का सिलेबस है। तो फिर मैथ्स सबसे हो जाएगा। 170 का पेपर होता है, 160 तो सबके आ जाएंगे, सबके आते हैं। अगर इंडिया में पढ़े और 10th में मेहनत की थी तो फिर 160 तो आने ही वाले हैं। तकलीफ लोगों को वर्बल में होती है, क्योंकि वर्बल काफी टफ होता है। 40 में से अगर 15 प्लस भी आ जाए तो भी अच्छा रहता है, क्योंकि वर्बल इज क्वाइट टफ। सो मेक श्योर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जीआरई वर्बल। मुझे जीआरई वर्बल ही चैलेंजिंग लगा था, क्योंकि आरसीज और जब पैसेजेस लॉन्ग हो जाते हैं, द इन्फॉर्मेशन इज नॉट वेरी क्लियर। जैसे 10th में जब देते थे उतना क्लियर नहीं होता, इट इज अ लिटिल बिट चैलेंजिंग। सो मेक श्योर आप जीआरई वर्बल में ज्यादा फोकस कर रहे हैं कंपेयर टू मैथ्स। मैथ्स 1 महीने में भी आप 2 महीने में भी कर लेंगे, मगर वर्बल की जब प्रैक्टिस पहले से होती है तभी क्लियर होता है। तो फिर वर्बल के लिए ध्यान रखिएगा। फिर सिलेक्ट की आपको टॉफल देनी है, आइल्स देनी है। आइल्स भी अमेरिका में चलती है, टॉफल भी चलती है। मगर अगर आपका ऐसा प्लान है कि यू वांट टू अप्लाई इन कनाडा एज वेल एज अमेरिका, देन मेक श्योर यू आर गिविंग आइल्स, क्योंकि टॉफल सब यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट नहीं होती कनाडा में। सो यस, आप आइल्स दे तो भी प्रेफरेबल है, टॉफल भी प्रेफरेबल है। अगर अमेरिका जाना है तो टॉफल से हो जाएगा, मगर अगर कनाडा में भी इच्छा है तो फिर आप आइल्स ही दीजिएगा। तो नाउ यू हैव योर जीआरई स्कोर एंड योर टॉफल स्कोर। उसके बाद तुरंत एलओआर लिखना स्टार्ट कर देना। अब एलओआर क्या होता है? लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अब मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, कॉलेज वालों ने बहुत हेल्प की थी मुझे। मैंने अमित गणात्रा सर, फिर द्वीपना मैम और अश्विन मकवाना सर, मैंने 3 लोगों का एलओआर लिया था। मेरे तीनों लोग से अच्छी खासी बातचीत थी। तो फिर आपके भी अगर कोई फैकल्टी जिनके साथ आपने कोई प्रोजेक्ट किया, या फिर इफ दे हैव बीन योर मेंटर, टेक एलओआर फ्रॉम देम। और स्कूल ने बहुत हेल्प की थी, क्योंकि जैसे ही मैंने एलओआर भेजा था फैकल्टी को, उन्होंने तुरंत वेरीफाई करके मुझे कंफर्मेशन दे दी थी कि मैं उन्हें प्रिंट करवा सकता हूँ। द नेक्स्ट डे आई वेंट टू कॉलेज और 3 दिन में मेरे एलओआर रेडी हो गए थे प्रिंटिंग के लिए। तो फिर कॉलेज का इसमें काफ़ी सपोर्ट रहा था कि एलओआर तुरंत मिल गए थे। मगर आप ऐसा मत करिएगा, एलओआर जो होता है वो इंटरनेट से थोड़ा भी देख के मत लिखना, क्योंकि इंटरनेट पे जितना भी देखोगा उसमें ऐसा ही हुआ, XYZ स्टूडेंट इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, ही हैज डन वेरी वेल, आई कैन वाउच फॉर हिम एंड सच। मगर ऐसे एलओआर मत लिखना, क्योंकि जो एडमिशन कमेटी है वो लोग सालों से ये काम कर रहे हैं,
और वो दिन में हजार एप्लीकेशंस देखते हैं, तो फिर अगर कोई भी जेनरिक एप्लीकेशन होती है वो सीधा साइड में कर देते हैं। तो कोई भी जेनरिक LOR मत लिखना। मैंने LOR में कैसा ऐड करवाया था कि मैंने हर सेमेस्टर में जो प्रोजेक्ट किया था, मेरे मेजर प्रोजेक्ट 3 थे, एक डेटा साइंस पे था, एक डेटा एनालिटिक्स पे था और एक मशीन लर्निंग पे था और एक रिसर्च का प्रोजेक्ट था। तो मैंने हर LOR में कोई एक प्रोजेक्ट का डिटेल मेंशन दिया था कि अचल ने ऐसे करके प्रोजेक्ट किया था और ऐसे LOR बनाया था, तो वो मुझे बहुत काम लगा था। सो ये एक प्रो टिप है, LOR में कोई एक अपने प्रोजेक्ट का इलेबरेट कर देना और जरा भी जेनरिक मत लिखना कि ये बंदा बहुत अच्छा है, उसने बहुत मेहनत की है, वो हंसता रहता है, अगर उसके फेस पे स्माइल होती है, तो ये सब मत लिखना। वो बहुत यूज टू हो गए फॉरेन वाले, तो वो सब इसमें कन्विंस नहीं होंगे। तो LOR जेनरिक मत लिखना, ये प्रो टिप है। उसके बाद SOP चाहिए रहेगी। तो SOP में जैसे मैंने कहा बहुत टाइम देना, हो सके तो महीना 1.5 महीना दे देना, मगर जितना हो सके रिसर्च करना कि कौन से प्रोजेक्ट में जा रहे हो, कौन से फैकल्टी पढ़ते हैं। हो सके तो फिर उनसे कांटेक्ट भी आना। इट वुड बी recommendable if you are able to contact them and tell them that you are interested in the research and you have checked their Google Scholar profile and your interests are matching, and ask them if they have place in their research list so they can add you into it. So yes, जितना हो सके रिसर्च करना, जरा भी जेनरिक मत लिखना। और हाँ, को करिकुलर को इम्पोर्टेंस मिलता है। मैं जिस समाज में था, तो फिर मैंने समाज के वहां से एक सर्विस की थी कि हम मेरी मम्मी भावनगर से, तो फिर भावनगर के पास एक छोटा विलेज है, तो फिर मैं वहाँ पे एक दिन के लिए गया था और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कंप्यूटर यूज करना सिखाया था कि इंटरनेट कैसे खोलते हैं, पेंट क्या होता है, सब बेसिक बेसिक। मगर ये सब जो छोटी छोटी कम्युनिटी सर्विस है, अगर कुछ भी किया हो तो फिर वो मेंशन करना। और मैं एनीमे काफी देखता हूँ, तो फिर मैंने ऐसा भी लिख दिया था कि मैं वॉलीबॉल टीम में था और ऐसा सब थोड़ा थोड़ा करके लिख दिया था। हो सके तो झूठ मत लिखना, मगर मैंने ऐसा अपना तुक्का लगा लिया था, क्योंकि को करिकुलर थोड़ा देते, क्योंकि उनको पता है कि कोई भी स्टूडेंट बैक टू बैक कोई स्टडीज करने वाला होता नहीं, तो फिर अपने फ्री टाइम में या फिर एंजॉय करने के लिए क्या कहते हो, क्योंकि उन्हें सिर्फ तुम्हारा, जैसे मैंने कहा, होलिस्टिक अप्रोच है, सिर्फ मार्क्स नहीं देखने की, क्या कर सकते हो वो देखना है। एंड टेल अबाउट योर प्लान्स। जैसे मैंने कहा कि मेरा जो प्रो स्टार्टअप है उसका मुझे एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए ये सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज चाहिए। So from your university, I will be able to gain experience in this specific field and this specific field, and that is how it will help me in my startup, जो मुझे इंडिया में काम लगेगा। मैंने ऐसी थोड़ी लाइन घुसा दी थी कि इंडिया में काम लगेगा, और ऐसा सीखने में इंटरेस्ट है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना, मेक श्योर कि आपके LOR रेडी हो। और अगर मान लो कि डेडलाइन 10 दिसंबर है, तो अगर आप 9 दिसंबर को रात को 11 बजे भी खत्म कर देंगे तो भी वो एक्सेप्ट होगी। मगर कुछ भी हो, डेडलाइन के पहले सब डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, जैसे मैंने कहा। और रेज्यूमे में फोटो और वैसी वैसी मत बनाना, एकदम सिंपल व्हाइट कलर की, और उसमें ब्लैक कलर में लिखना अपना नाम, जितना भी वर्क एक्सपीरियंस, और वो एकदम सादी सिंपल बनाना, और अपनी CGPA मेंशन कर देना। कुछ यूनिवर्सिटी होती है जो वेस्ट इवेल्यूएशन करके एक चीज आती है, वर्ल्ड एजुकेशन सोसाइटी का, जो आपके 10 CGPA को 4 GPA में कन्वर्ट करती है, मगर वो हर यूनिवर्सिटी नहीं मांगती। जब मैं SGSU में अप्लाई कर रहा था तो उन्होंने वैसे इवेल्यूएशन मांगा था, तो 7 सेम तक का वेस्ट GPA चाहिए था। अगर आपकी 8 CGPA है तो 8 CGPA विल बी अबाउट 3.4 आउट ऑफ 4 ऑन देयर स्केल। और मेरे जब 8.44 थे, 8.44 CGPA 8 सेम के, तब मेरी GPA हुई थी 3.65 आउट ऑफ 4। तो अब दिमाग में ये 4 नंबर रखना, 8.4 पे, ओके आई रिपीट, 8.4 पे मेरी 3.65 हुई थी, 3.65 आउट ऑफ 4 ऑन 8.4। तो ये आप एक ख्याल रखिएगा कि अगर CGPA हो सके तो फिर अच्छी रखना। 8+ तो बहुत अच्छी है। मैं पहले बहुत मस्ती और इन सब में था, तो 6 सेमेस्टर तक मेरी CGPA 8 नहीं हुई थी, तो उसका भी मुझे बहुत टेंशन था, अगर 8 CGPA के नीचे हुई तो क्या होगा। मगर मेक श्योर कि थोड़ी अच्छी खासी CGPA अगर मास्टर्स का ही प्लान हो तो यस, ये सब का एक ध्यान रखना। वन मोर थिंग की जो टॉप यूनिवर्सिटीज, जैसे मैंने कहा, जितनी भी UC सिस्टम है उनका तो 15 दिसंबर के पहले खत्म ही हो जाता है। और अगर आप GRE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर IELTS और TOEFL आराम से हो जाएगा। मैंने 4 दिन प्रिपरेशन की तो मुझे 110 आ गए थे। मुझे लिसनिंग में 29 आउट ऑफ 30 मार्क्स आए थे। वो इतना ईजी होता है, जरा भी डिफिकल्ट नहीं होता। IELTS भी हो जाता है। IELTS में राइटिंग में थोड़ा तकलीफ होता है, तो राइटिंग की ज्यादा प्रैक्टिस करना IELTS के लिए। ऐसा मुझे रिव्यू मिला है, मैंने IELTS का प्रैक्टिस पेपर नहीं दिया, मगर मेक श्योर कि अगर IELTS दे रहे हो तो फिर यू फोकस ऑन राइटिंग, क्योंकि राइटिंग में मैक्सिमम मार्क कट होते हैं। मेरी एक फ्रेंड के IELTS में 9 में से 8 थे, एंड शी गॉट 9 इन रीडिंग एंड 9 इन लिसनिंग, मगर उसको 9 में से सिर्फ 7 आए थे राइटिंग में। सो ओवरऑल स्कोर कम हो गया, 9 में से 8 8.5 आ सकते थे तब।
सो आइट्स के लिए एक टिप होगी कि मेक श्योर आप राइटिंग में फोकस करें. टॉफल ओवरऑल काफ़ी ईजी है, इतना प्रॉब्लम नहीं होगा. एंड इफ इट इज जीआरई, मेक श्योर जीआरई वर्बल के लिए मैक्सिमम मेहनत कर रहे हो. और टॉप यूनिवर्सिटीज मोस्टली जनवरी के पहले ख़त्म हो जाती है, जनवरी के पहले उनकी डेडलाइन चली जाती है. तो एकदम ध्यान रखना कि आपका सब चीज़ रेडी होनी चाहिए, सब चीज़. एलओआर रेडी होनी चाहिए, रेज्यूमे अगर पोर्टफोलियो बना सको तो वेल एंड गुड, ना बने पोर्टफोलियो ऑप्शन है, मगर मैंने बना दिया था सिक्योरिटी के लिए. और जो थोड़ी पीछे यूनिवर्सिटीज होती है उनकी अप्रैल में आती है. तो मैं आपको 2 टाइमलाइन दूंगा. अगर टॉप यूनिवर्सिटीज में करना है, अगर यूसी सिस्टम से दे रहे हो या फिर ईस्ट कोस्ट पे आप एनवाईयू में दे रहे हो या फिर यूमास में दे रहे हो या फिर ये नॉर्थ ईस्टर्न में दे रहे हो, इलिनॉइस बाजू अगर आप नॉर्थ वेस्टर्न और उन सब कॉलेजेस में दे रहे हो जो, और यूआईयूसी में दे रहे हो टॉप यूनिवर्सिटीज, उनका प्रोबेबली दिसंबर 15 या जनवरी 10 के पहले होगा. तो वहां तक सब रेडी कर लेना. और जो थोड़ी टीयर 2 कॉलेज होगी, जैसे अपनी चारों सेट है, तो फिर ऐसे अगर टीयर 2 कॉलेजेस हो तो फिर टीयर 2 हमेशा अप्रैल के पहले ही होगी. तो यू हैव टाइम टू प्रिपेयर एसओपीज फॉर टीयर 2. मगर अगर टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है तो मेक श्योर कि दिसंबर के पहले सब रेडी हो. और मुझसे काफ़ी गलतियां हुई थी, जैसे कॉस्ट सेविंग मैंने बराबर नहीं किया था. मैंने जैसे ही मेरा जीआरई टॉफल आ गया था, मैंने जनवरी में 10 कॉलेजेस में मैंने जीआरई स्कोर भेज दिया था. मगर बाय द एंड ऑफ मार्च मैंने 10 में से 4 कॉलेज तो वैसे ही ड्रॉप कर दी थी, क्योंकि हर कॉलेज की एप्लीकेशन फ़ी होती है. तो मैंने सोचा कि इस कॉलेज की एप्लीकेशन चलो $150 है, मगर उसमें कोई मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे उस कॉलेज में जाने में कोई रस नहीं है. मगर फिर मेरे जीआरई के उसमें पैसे चले गए थे $27. तो ऐसे करके मेरे को 10,000 जीतने तो उसमें वेस्ट हो गए थे. तो मेक श्योर कि आप बहुत सोच समझ के करो, या फिर आपके कोई फ्रेंड्स या फिर कंसल्टेंट जो भी है उनसे बात करना, कीप देम इन द प्रोसेस. टॉक विथ योर फैकल्टीज और सीनियर्स की कौन सी कॉलेज अच्छी है कौन सी नहीं है, और ऐसे आप लिस्ट बना सकते हैं. लिस्ट के लिए टॉप नेम्स तो है, यूएस न्यूज़ पे जाके अगर आप टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 करेंगे आ ही जाएगा. एक यॉकेट करके वेबसाइट है, उसमें भी आपको यूनिवर्सिटी की लिस्ट मिल जाएगी. मगर मैंने देखा है कि मोस्टली सीनियर से जब फीडबैक लेते हैं तो फिर कहते हैं. और एक दूसरी बात कहनी थी कि यूनिवर्सिटी है वो एक ब्रांड नेम है, पर वहाँ जाके आपको अपने स्किल्स ही काम लगने वाले हैं. सो अगर आपकी टीयर 1 नहीं है या फिर आईवी लीग कॉलेज नहीं, या फिर ऐसी कॉलेज नहीं है कि नाम सुन के होश उड़ जाए, तो डोंट गेट डीमोटिवेटेड. क्योंकि 4 साल इतनी मेहनत की है, 2 साल वहाँ पे भी मेहनत हो ही जाएगी और सबका अच्छा ही होने वाला है. तो फिर जरा भी डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि मंजिल और भी है. तो बात यही आपको बतानी थी. दूसरा कि अगर यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर रहे हो, तो मुझे नॉर्थ ईस्टर्न में अपॉर्चुनिटी मिली थी एंड इट वाज अ रियली गुड थिंग. एक तो कि उनका कोऑप प्रोग्राम बड़ा अच्छा है. अगर इफ यू लुक अप कि एनयू में कोऑप कैसे, कोऑप बेसिकली एक समर इंटर्नशिप है जो 6 महीने के लिए करनी होती है. तो अगर आपको कोऑप मिल जाता है देन इट इज रियली इजी टू गेट जॉब फॉर 3 इयर्स, जो ओपीटी में आपके आता है. मगर मेरा एक क्राइटेरिया अलग था. मेरा एक क्राइटेरिया था कि मुझे सबसे पहले द नंबर 1 क्राइटेरिया वाज अपॉर्चुनिटी. द सेकंड क्राइटेरिया वाज फीस, की खर्चा कितना होने वाला है. एंड द थर्ड वन वाज लोकेशन, कि लोकेशन कितनी प्राइम है या कितनी अच्छी है. तो नॉर्थ ईस्टर्न में मुझे डेफिनेटली कोऑप की अपॉर्चुनिटी थी, और नॉर्थ ईस्टर्न में तो है ही कि वहाँ पे टेस्ला माइक्रोसॉफ्ट सब जगह मिल जाता है. मगर वो फिर मैंने फीस की वजह से ड्रॉप कर दी थी. तो फिर ऐसे अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाना और काम करना. और अगर कुछ भी हो तो फिर मेरा रोल नंबर है 17DC058, और आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर यू कैन कनेक्ट टू मी ओवर लिंक्डइन. यूजुअली मैं सबको मैसेज कर देता हूँ. मैंने अभी मेल आईडी से लॉग आउट कर दी, इसलिए मुझे मेल्स नहीं आते. मगर अगर आप कांटेक्ट कर रहे हो, आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई यू बैक. सो यस, इतना एक काफ़ी ऐसे एक्सपीरियंस हो जाता है. जब आप अगस्त से स्टार्ट करते हो और अगस्त तक, जैसे मेरी पूरी प्रोसेस थी 1 साल से थी, तो मैं 1 साल से हिस्से में रहा हूँ. तो फिर काफ़ी सब सीखने को मिलता है, काफ़ी सब एक्सपीरियंस हो जाते हैं और सब होता है. सो यस, कोई भी अगर सवाल हो तो फिर यू गाइस कैन आस्क मी और कनेक्ट टू मी लेटर. हेलो. Yeah, can you hear me? Hi Rishi. Yes. Yeah, I mean, if you don't have that great of a CGPA, is it still possible for you to get into good universities? चल भैया. Yes, definitely dude. जैसे देख, मैं बताता हूँ, मेरी CGPA 8.2 थी, ओके. और 8.2 पे भी मुझे इसमें एडमिशन तो मिला है. मगर जैसे आई सेड, इट इज एन होलिस्टिक अप्रोच, राइट. CGPA में जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है 8 का, अगर वो हो तो बहुत अच्छा है, मगर यू स्टिल हैव एन अपॉर्चुनिटी. जैसे मेरा ये क्लासमेट है, उसकी CGPA काफ़ी कम थी, ही हैड 7.6,
और 7.6 पे उसकी जीपीए थी कुछ 3.3 के आसपास ही हो रही थी, 7.6 पे, ओके, 8 सेमेस्टर की टोटल सीजीपीए, बट ही वाज एबल टू गेट इनटू एसजीएसयू क्योंकि उसका जीआर ही अच्छा था। सो अगर सीजीपीए आपकी इतनी वंडरफुल नहीं है, 7.5 या फिर 8 एवरेज सीजीपीए लगती है, तो देयर इज अ स्टिल अ चांस, डीमोटिवेट मत होना, अप्लाई तो करना ही, खाली मेक श्योर कि एसओपी अच्छी हो, एलओआर आप लेटर अच्छे लेके आते हो या फिर अपनी रेज्यूमे अच्छी बनाते हो। Okay, thank you, भैया. एनी टाइम ब्रो। Okay, so thank you, Achal, for sharing your experience and whatever the mistakes you did. Fine, so that the students can learn from it and achieve their goals for getting admission in reputed universities in out of India. Fine, for in abroad. Thank you so Sure, much. Yes, now we have with us Forum Thakkar. Actually, the students generally have some such kind of demand that they want placement as a software developer and only wants placements in this criteria only. So I would like to ask Forum to share her experience as a QA in Crest Data System. Yes, Forum, are you with us? Yes, ma'am. Yes. Currently I am a quality assurance engineer at Crest Data Systems. So, firstly, I'd like to share that I did not have any interest in coding. So it's okay if you don't have interest in coding or you are not good at coding. There are many other fields apart from coding. So basically, quality assurance is making sure that the software developed by the coder is bug free. So you have to test the software and make sure there are no bugs in that. So that's the thing about quality assurance. You will be studying about in I guess 6th semester. You will have a course. You will have the subject as software engineering. So you'll get to know more about that and that. And like almost everything has been covered by all of the other students. So the one thing I'd like to share is that if you do not get placed in the first company, don't feel depressed. Just work hard on your weaknesses and give your best in the next company that comes. And please make sure to prepare it with a don't start preparing a week before the placement starts. So no matter how much good you are, but it will still take some time to solve the first round is aptitude round. So you have to prepare for that. Make sure to go through all the tricks for solving the questions, because the questions will be easy, but you won't be able to solve all of them if you don't follow the tricks and all. So it's not that you have to go in the software developer only. Quality assurance is also an upcoming field in the IT. Yeah. Yes, thank you, Forum. Anything else that you want to share? No, this year I saw that many of the students had applied for software developer, but not for the QA branch. So it's really okay for you to apply for quality assurance. There is nothing that only software developer is a good branch and all. So you can apply for that. Okay. Thank you, Forum, for sharing your experience as a QA, because students have their in mind that we should only go for software developer. So this is one of the example that QA is not bad, and it is also having a good opportunity in future as well. Fine. Yes. So now, yes, any of the student have any doubt, then either you can unmute yourself and ask. Any student would like to ask any questions or queries to your seniors?
Hello, ma'am. Hello. Yes, Jeet. Ma'am, I mean, if it is possible to get the contact details for contacting Anchal Bhaiya, so that if we have got any sort of doubts in future, we can, just have a contact to the for contacting them. Yeah, actually, he has left the meeting. He just texted me right now. You can contact him on LinkedIn. Okay, so Yes, can sure. I will provide you the contact details of the students. okay, ma'am. Thank you. What is his surname? Achal's surname. Rajiguru. Okay, Mr. thank you. Rajiguru. Okay, thank you. Okay, anyone else have any query, doubt, or any suggestions you want from your seniors? Okay, I will share their personal mail ID as well as official mail IDs with you. So you can contact them by mailing them whatever queries you are having. Currently, if you don't have queries, then you can contact later on their mail IDs. And I would like to thank all the students, our pass out students who joined and shared their experience and guided our students for their bright future and for achieving their goals in their life. Thank you so much all. And I would like to thank our principal sir and HODs for allowing us and suggesting us to organize such kind of seminar or webinar or interaction session, we can say. Thank you all. Have a good day. Bye. Thanks, ma'am. Bye. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thanks, ma'am. Thanks a lot, ma'am. Thank you, guys. Thank you.